welcome back to my channel. In this video I'm gonna test out Color Studio Photo Finish Foundation and their powder. So I've just moisturized my skin and now I'm going to prime it. For primer I'm using APK's Rose Gold Matte Primer and applying it onto the areas where I need it the most. Now I'm going to highlight the high points of my face. For that I'm using this little liquid highlighter by e.l.f. Cosmetics and blending it. I shot this video a few months ago, लेकिन वॉइस ओवर के लिए मुझे वक्त नहीं मिल रहा था, तो जैसे ही मुझे टाइम मिला मैंने सोचा इसका वॉइस ओवर कर लिया जाए. Now it's time for foundation. This is Color Studio Invincible Foundation, Flawless Photo Finish, and it claims that it is long wear, water resistant and SPF 12. Before blending and spreading the foundation all over my face, first I tried to blend this with the foundation brush, but this gave me really hard time to blend because ये इतना ड्राई हो चुका था. Just in few seconds बहुत ड्राई हो चुका था मेरे फेस पे. Then I tried to blend with damp beauty blender, but सेम सिचुएशन थी. कोई भी फाउंडेशन ब्यूटी ब्लेंडर से बहुत अच्छा ब्लेंड हो जाता है, लेकिन ये हर जगह पैचेस हो रहे थे, इसके ड्राई पैचेस छोड़ रहा था. फिर मैं दोबारा से इसको ब्रश से ही ब्लेंड किया था. रिज़ल्ट आपके सामने है. बहुत मुश्किल से ब्लेंड हो रहा था. अगर आप इसे यूज़ करना चाहते हैं तो इसका एक ही हल है कि आप इसे पूरे फेस पे एक साथ अप्लाई ना करें. थोड़ा सा पहले आप एक तरफ लगाएं और उसे ब्लेंड करें और फिर लगाएं और ब्लेंड करें. आप इसे छोड़ नहीं सकते, क्योंकि अगर आप छोड़ेंगे तो इसका ऐसा कुछ हाल होगा जो आप देख रहे हैं कि ये फिर ड्राई हो जाएगा. अब हम कंसीलर लगाएंगे, बस थोड़े से अपने अंडर आई एरिया पे, क्योंकि हाईलाइट नहीं करना मुझे, और फिर ब्लेंड कर लेंगे. Now I am setting everything in place with Color Studio Compact Powder and it works really good. हर चीज़ बहुत अच्छे से सेट कर दी थी इसने. मैंने हाईलाइट भी किया अपने अंडर आई एरिया को. I'm finishing up my look with some bronzer, blush and some basic makeup.
watching this video. If you liked it, don't forget to like, share and comment. For more fun videos, subscribe to my channel.